This conference will now be recorded. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक द व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक फील्ड्स, फील्ड्स किस तरीके से क्रिएट होती हैं। नाउ ऐप, ऐप किस तरीके से क्रिएट होते हैं, लाइक अ टैब, जो टैब्स बनते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। नाउ ऑल्सो द डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज क्या है वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। नाउ मास्टर एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है वो चीजें मैंने बताई है कि द मास्टर ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंसीज होंगी, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। गिव मी अ मिनट। गॉट इट गाइस। इसी चीज के अंदर मैंने आपको बताया था फील्ड डिपेंडेंसीज, मास्टर और चाइल्ड के अंदर भी मैंने फील्ड डिपेंडेंसीज भी बताई थी। यस सर। फील्ड डिपेंडेंसीज का मतलब है कि एक होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज की, लाइक का एक पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेम एज एक पेरेंट फील्ड, यानी कि मेरी एक फील्ड भी मेरी दूसरी फील्ड पे क्या है, डिपेंडेंस है। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने कवर करी थी। नाउ इन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड एक और छोटा सा प्रोजेक्ट हम आज करते हैं, जो कि कंप्लीट प्रोजेक्ट हम करेंगे वन गो में, जिसमें हम ये सारी चीजें भी कवर करेंगे और कुछ नई चीजें और भी एड ऑन करेंगे। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? ओके सर। नाउ कि आज हम एक और प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक हम एक न्यू ऐप क्रिएट करते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, एंड दिस इज माय ऐप, दिस इज अ वन स्मॉल ऐप, और ये ऐप है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, लाइक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज लुक लाइक द आईसीसीपी इंस्टीट्यूट। एक आईसीसीपी इंस्टीट्यूट है, इसकी हमें एक ऐप बनानी है। So now first you create a app. So how to create app is a simply I'm just go to the Salesforce account, or I'm already explaining you कि when you log in with the Salesforce account, by default which console is open? Everyone? Lightning. Yeah. So now I'm just log in with Salesforce account. And create a app. So guys टू थिंग्स हैं, एक होता है हमारा ऐप लॉन्चर जहां पर आपको सारी एप्स दिखाई देंगी। Now you can see if you are logged in with the Salesforce console, you can see the first option nearby the Salesforce logo, the app launcher is available. When you create any app, the all apps show in this location. आपकी सारी की सारी एप्स इस लोकेशन पे आपको दिखाई देंगी। Now you can click the view all, and this is the all apps. These some default apps is created and some deployed by me. Now I'm just creating yesterday the hotel management and ICCP institute, but ये complete नहीं हो पाई थी। Now I'm just delete. So when you delete any app, अगर आप किसी भी ऐप को डिलीट करना चाहते हैं, या either you create a new app, is it simply you can go and search in a app, and click on a app manager, and you can see the list of the all apps. जितनी भी apps हैं वो सारी की सारी list आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। Now I am created two apps, the app number 8 and 9. This is a created by me, the custom app. Now I'm just select this app and delete the app. जो भी मेरे existing apps हैं मैं उन सारी apps को यहाँ से delete कर। Got it? How to delete app? But guys जो भी हमारी default apps होंगी, like any default app,
like any default app is available. Now you can see the community app, there's a no delete option is available. Now if you create a new app, so now this is a new lightning app. When you create a new app, you can give the name. So my app name is like a ICCP Institute. Now the developer name is like a same as app name, or either you can use any. Now you can see that this is a star, that if this star option is coming, that means this is a mandatory option. Got it guys? The red color star you can see, everyone. स्टार बटन रिप्रेजेंट कि दिस इज अ मैंडेटरी, कि आपको अगर ये फिल नहीं करा तो आप नेक्स्ट प्रोसेस होगा ही नहीं. नाउ द डिस्क्रिप्शन लाइक ICCP प्रोवाइड cloud DevOps and Salesforce training. Now, if any logo is available for institute, logo is available, you can upload a logo. But there is no any logo, so now I'm upload them. मैं अपना एक वेब पेज अपलोड कर देता हूँ. Now guys, you can see the look like कि आपकी जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगी. Got it? App launcher preview. Everyone got it the point? Right. Now the click on a next. आपके जो नेविगेशन है लाइटनिंग ऐप की कहां पर किस फॉर्मेट में दिखे, तो नाउ मैं चाहता हूं स्टैंडर्ड नेविगेशन यूज हो, डेस्कटॉप एंड फोन सब पे एक्सेसिबल हो. नेक्स्ट, यूटिलिटीज आइटम्स डेस्कटॉप ओनली, मैं डिफॉल्ट दे रहा हूं. नाउ दिस इज द नेविगेशन आइटम्स. नेविगेशन आइटम्स का मतलब है टैब. दिस इज द स्टैंडर्ड टैब क्रिएटेड बाय द Salesforce. Now I'm add a one tab is like I'm add a account. So like I'm just create an institute. So now I'm add a account tab, for example. Or either a choice is here, you can add any account. So I'm select and then click on add. After that is a mandatory option. So my question for Asutosh, what is the use available profile? यहाँ पर क्या चीज है ये? मैंने कल भी बताया था. सर यहाँ पे हम सिस्टम एडमिनेटर हम चूज करेंगे, जिससे कि जो भी सिस्टम एडमिन है वो देख पाए प्रोफाइल, जो एप्लीकेशन है हमारा. बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर है दिस इज द परमिशंस. परमिशन हम प्रोवाइड करेंगे. हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप किसको डिस्प्ले हो, तो चॉइस इज योर कि आप हर किसी को एक्सेस कराना चाहते हो पर्टिकुलर. सो नाउ कि मैं अभी एडमिन हूं और मैं ऐप बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस ऐप को देख सकूं. यस और नो गाइस? गॉट इट माय पॉइंट? नो आई एम टाइप, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम एडमिन नहीं कराता तो ये ऐप मेरे को नहीं दिखाई देगी. तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं. नाउ सेव एंड फिनिश. If I'm just click save and finish, you can see the point number 8, my app is deployed successfully. Got it? Okay. Navdesh ji, got it the point? Yes, yes. Sachin, is it clear? Sachin, got it the point? Rupansi, everyone. Yes, sir. Now, okay. Guys, किसी को mic Sachin का mic कैसा है? Sachin, you are not using a headphone, I think so. Unmuted. So now guys is the next point. If you can see, if you can click on the app launcher, this app not display in app launcher, because this is my system admin panel and now I'm not provide any permissions. That's why this app is not showing this location. So now again, if something is missing, like I'm not give the permission, now I'm just go back and edit my app. And next, give the permission, say add a system administrator, add it and save it. Now if I'm just back to the app console, app launcher, you can see that my app is shown. Inside the app, I'm just adding a one object. This object is look like a content. Like I'm just click on a view all and you can see I'm deploy a one app is a ICCP Institute. Now I'm just click.
So now the first of all, I'm just create a one ICCP Institute, or now I'm adding a one object is a account. Got it? The point, everyone? Is it clear till now? अब after that, somebody asked कि आपने जो मेरी ऐप बनाई है, it show the like students के लिए students records and employees के लिए employees records मेरे को यहाँ पर मिले. Got it my point? यानी कि we have create a two objects. This is the object one with the name of student, and this is the object two is a look like a employee. Inside the object, like these are the objects. Object one and now object two. Now, how to create objects? Again, I'm create objects. I'm creating two objects. I'm just click on I'm again click on app launcher view, and I'm right click on open my app in a new window. Right click and open in a new window. You can click on name and open in a new tab. So now I'm open at my app for this location. जो हम easily जो भी चीजें edit करेंगे, so वो यहाँ पर मेरी views होते रहेंगे. Right now there's a two option is available now. कि मेरी दो और options यहाँ पे हैं. One is student and second is employee. Now I'm just go to the object manager and create a two objects. So now these are the default object and I'm using an account object. That means that this fields, इस account के अंदर जो fields आ रखे हैं वो सारी की सारी fields आपको वहां पर account option के अंदर दिखेंगे. ये सारी की सारी fields. तो आप अगर कुछ changes करना चाहते हैं और add करना चाहते हैं तो यहाँ पे fields को edit कर सकते हैं और इधर delete करना चाहते हैं. So but now I'm just create a new object. I'm just click on an object and create custom object. Now the custom object always see with the name of C. Now I'm just create a one custom object. The name is employee. And now if you add a tab, अगर आप इस एम्प्लॉय का टैब भी ऐड करना चाहते हैं तो आपको अलग से टैब ऑप्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. आप यहीं से क्लिक कर सकते हो लॉन्च न्यू कस्टम टैब ऑप्शन, और आइदर यू कैन गो डायरेक्टली टू द टैब एंड ऐड अ ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन क्रिएट अ टैब, बट मैं यहीं से ही लॉन्च कर रहा हूं. तो आप यहीं से ही डायरेक्ट टैब ऑप्शन पे जा सकते हैं, या आइदर फर्स्ट यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, then you can search in a tab and then create a tab. But if I'm just select this option, directly it's moved to a tab option. So now it's moved up with employee and same name is and now I'm just click on save it. Now you can see I'm just directly move tab. I'm just select a object. So now I'm just create a one object with the name of employee. Select automatically. You can give the style. You can give the any style. Choice is your alphabetic, blank, or book. So I'm just select like a book related to this. And now I'm just next. Give the permissions. So this is the default permissions कि कौन-कौन इनको access करे. So now मैं चाहता हूँ default सारी जगह accessible हो. Now the next it show the all apps. So this is the list of all apps जो यहाँ पे launch के अंदर जितनी भी apps आ रही है वही सारी apps आपको यहाँ पे दिखा रही है. But I'm add this tab to the all application or a specific app. So now I'm create my customization app with the name of ICCP Institute. Now you can see the end of the list. This show the ICCP Institute. I'm selected this app and then click on save.
Now I'm just adding, if you can go for the app and then click on a refresh, you can see the new tab is added with the name of employee. But guys, always remember, if you can add any employee text related, the automatically one field add, standard field else automatically with the field name is a name. Now if I'm just click that, you can see that this field is automatically added by the Salesforce name field. No any field is available. Now I'm just back to, and I'm just create a one more object. Like I'm just click on object manager and then again click on new object, custom objects, and after that I'm just give the name of object. Give the name of student info. So I'm just कि मेरे पास जो next tab है, it comes for the student info, plural name, and label जो आप यहाँ पे search करेंगे, same student in text format, and I'm also create a launch student tab options. Now the click on save it, and style I'm just select a default style, or either you can select any style. The optional field like next, and apply to all or either only system admin. तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं जो भी फील्ड्स आप लेना चाहते हैं. And now just click on a next. Uncheck this and add for specific. If you create a 10 apps or 20 apps, so choice is yours कि आप किस किस के साथ ये particular tab add करना चाहते हैं. I'm just add for ICCP Institute, and now the click on save. You can see there's a one more tab is coming with the name of student info. Now if I'm just click on the student info and then click on a new, you can see the automatically one field is added with the name. Clear till now? Till object is clear, how to create app and how to add object and how to add tab. Is it clear? Right. Yes, sir. Rupanshi, Asutosh, Sachin, everyone. Yes, sir. Now guys, after that some important task is coming. Different tabs के like some task हम जो yesterday previous lectures में कर चुके हैं, वो वाले टास्क में आज एड ऑन नहीं करने वाला. आज मैं यहाँ पे आपको फील्ड तो बताऊंगा, बट फील्ड के अंदर ना मैं कुछ अदर चीजें आपको और बताना चाहता हूँ. लाइक मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिपेंडेंसीज क्या है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ. लाइक कि आज हमारे पास जो कुछ फील्ड्स है ना, वो फील्ड्स अलग अलग है. लाइक कि वन फील्ड है हमारी स्टूडेंट्स की और सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा एम्प्लॉय का. नाउ कि इन फील्ड्स के अंदर अब मेरे कस्टमर की नीड है कि नेम जो कि ऑलरेडी फील्ड ऐड हो चुकी है. यस और नो? Now second field is coming is look like a second field is like a date of birth. Same as we also require a date of birth of. Now here is student ID. Yes or no? और यहाँ पे क्या आएगी? एम्प्लॉय आईडी. Now some other thing is available like age. So age is always calculated by the auto. कि अगर किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है लाइक 20th अप्रैल इन 19 और आइदर 2002, तो आज के हिसाब से वो कितने ईयर का हो जाना चाहिए? 20 इयर्स का. यस और नो? क्योंकि 22 चल रहा है और अगर उसकी 2002 है अप्रैल, तो आज की डेट से कि अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कोई डेट ऑफ बर्थ बढ़ता है तो उसकी एज ऑटोमेटिकली क्या आ जानी चाहिए? यहाँ पर उसकी एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच, यानी कि यहाँ पर भी क्या डिपेंडेंसीज बन गई कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरी क्या आ रही है? एज आ रही है.
एज आ रही है. Yes or no, everyone? Sitish, Asutosh, got it the point? क्लियर सर, क्लियर. Bounce तो नहीं जा रहा guys, bounce तो नहीं हो रहा. Now the same concept is applied is like a age option in this location. So now I'm just create both are the similar. जो चीज मैं पहले में करूंगा सेम ही सेकंड में भी करूंगा, बट यहाँ पे क्या सिर्फ नाम चेंज है. बट इस बार डिपेंडेंसीज के लिए आई एम नॉट यूजिंग अ डिपेंडेंसीज ऑप्शन. आई एम यूजिंग अ डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला डेटा टाइप. एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए आई एम यूजिंग अ डेट डेटा टाइप. Or if you need a date of birth with time, so you can use date with time data type. So there are different data types is available. Now I'm first create a look like a student ID, or if you create an employee ID. So how to create either a date of birth. So now I'm just go to the object and click on a object manager and search a object. First I'm search a object with the name of student. I'm just click and search student, then click on object. You can see the field and relationship. There are some fields is default. This is a default, and name field is added by default. Now I'm just add a new field, and now I'm create a date of birth field. So now I'm select a date. I'm select the option is date. Or either you need a date and time both, so you can select date and time option. Now I'm select a date. Got it? Now click on next. Give the name is like a date Oh, not. of birth. Now the same is the date of birth. Like there the one option is available, the always required a value in the field in order to the save a record. I'm just click this option. गाइस मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, बट मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा. गॉट इट? क्योंकि मैं आउटपुट दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा. एक ऐप के अंदर मैं ये क्लिक करूंगा और एक ऐप के अंदर मैं क्लिक नहीं करूंगा. So now I'm just click required always required a value. तो ये जो ऑप्शंस है मैं आपको बता देता हूँ why. This option is a mandatory. कि अगर मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक कर दिया that means date of birth is a mandatory हो जाएगा. Got it my point? यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट फील्ड पे जा ही नहीं सकते, नेक्स्ट होगा ही नहीं आप. Got it the point everyone? Yes. Now next, this is the permissions. Now next, and save and new. Now I'm adding another field. Again I'm just adding another field is look like a student ID. That means student ID, that means I'm just get the auto generate auto numbers. ID always generate by the auto. Got it? The data type. Okay. Like a system generate कि automatically मेरी student IDs or whatever जो भी मेरे को generate करना है वो सारी चीजें generate हो. Now I'm just select this data type, then click is like name is student student ID. Now display the format like ICCP ST ID. Now the option is like ICCP ST ID, then click. Now choice is your कि आपको कितनी फील्ड में देना है. Now the start ID is look like I'm just give the one, or either you can give the 1000 of one. Choice is your, I'm just give the one. Got it? Okay. After that, I'm just click on this option and click on a next, and now I'm just click save and new. After that, one more field I'm adding.
click on save. What happened? Student layout. Save and continue. क्या एरर दे रहा है? कोई एरर भी तो नहीं दे रहा. स्टॉक कर. क्या हुआ नुपुर जी? फंस गया. हाँ स्टक हो गया. सेव भी नहीं हो रहा, एरर भी नहीं दे रहा. व्हाट हैपेंड? I'm just click on save. I'm just refresh it guys. मैं रिफ्रेश ही कर लेता हूँ कंसोल को, तो कहीं शुरू से ना हो जाए, और अगर शुरू से भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्टूडेंट एंड आई एम जस्ट चेक. तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ. आई एम जस्ट क्लिक ऑन फील्ड्स. तो मेरी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी की फील्ड बन चुकी है. गॉट इट? So this auto generate one field. Date of birth is also available, name, but as per my app there are the 4 field. Now the one age field is also required. Yes. Now I'm just create a one more field. I'm just click on a new, or at this time ki agar if anybody can select a date, if anyone select a date, so automatically my age is calculated. Got it? Now I'm using a formula. This is the one kind of mathematics formula. तो मेरा मैथ वैसे कमजोर है गाइस, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना. Now I'm just click on a next. Like I'm just fit the field name is age. After that, I'm just again I'm just open a object manager in a new tab. And now I'm just create a one field with the name of student. So this is a field and this is a my date of birth field name. So the same name I'm just copy the same name. Okay, मैंने ये नाम करा है क्योंकि अब मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ. I'm just using a formula of age. Okay. तो I'm age का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ. So age always आती है numbers में. Okay. And startup कि अब age कहाँ से start हो, मैं चाहता हूँ 0 से. Got it? Okay. Now the click on next. यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि सिंपल फॉर्मूला और एडवांस फॉर्मूला. आई एम सिलेक्ट एडवांस फॉर्मूला. सिलेक्ट अ फंक्शन टाइप्स, डिफरेंट फंक्शन टाइप. आई एम सिलेक्ट अ फंक्शन टाइप इज लाइक टुडे, कि अगर कोई भी फिल करता है उस दिन से वो कैलकुलेट करे. तो नाउ आई एम सिलेक्ट अ टुडे and give the formula. I'm just give the between bracket. I'm using or type a name is today. टुडे का मतलब है जहां से भी आपकी डेट स्टार्ट होगी आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा. हाइफन गिव द नेम ऑफ योर अनदर फील्ड. तो मेरी अनदर फील्ड का नेम क्या है? ये. नाउ द कैलकुलेट बिटवीन 365 days. 365.25 में कर देता हूं क्योंकि 366 भी हो जाता है कभी कभार. तो नाउ द कैलकुलेट डिवाइडेड बाय द 365 days. Got it? Okay. Now you can also check your formula with the check the syntax. If the syntax, if any error is found, it give you the error. There's no any error, and now I'm just click on next. And again next and save. Now guys you can see कि I'm just create a this field from a student. Now if you can, I'm the same, I'm just go back and I'm create a one more object. The object name is employee. Okay. So now guys the same object is available in employee. There's nothing is different. Now the field is the first is look like create a new. I'm just create an employee ID.
When you create an employee ID, you can select auto number, data type, same as look like student ID, the same data type I'm using. Got it, Utpansi? Got it, my point? Right. Yes, sir. EMP hyphen ID, I'm just give the name of employee ID. I'm using a same like ICCP EMP ID. Now the starting number, choice is yours. You are using 1, or either it give me the error because I'm not give the mention the digit. Either you can add a 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. So I'm just put the 5 digit. Now the next, again click on next, save and new. After that, I'm just create another type is date. But at this time, I'm just adding some changes inside the date. I'm just like employee, or either I'm just give the DATE, date of birth. And now the field name is date of birth. I'm not click on this option. In a previous object, I'm just click on required. But now I'm not click any required field. That means it's not a mandatory. Got it the point? Right. अगर मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करा तो यू कैन सी कि वहां पर अब स्टार का ऑप्शन जो रेड कलर से आपको स्टार दिख रहा था वो ऑप्शंस वहां पर नहीं है. Now I'm just create a date field. Now I'm just create already I'm just create a formula of like an employee. If any employee give select a date of birth. So now I'm just using a same task. Okay. It look like a age. Now the numbers, is it in 0? In the next is the advanced formula selected today. Now today, so इसने देखिए अपने आप ले लिया. टुडे मैंने क्लिक करा और जब give the bracket, तो field map में कराना है तो मैं just give the brackets. And now the between brackets I'm using a command. Is it today hyphen the name of the another field. So what is the name of the my another field? Is it name of my another field? Just click object manager, and now the my field object name is date of birth. What is the actual name? तो guys अगर आप same name नहीं देंगे ना तो it give you the error. ये आपको error दे देगा अगर आपने same field name नहीं डाला. एक हाइफन की जगह डॉट लगा दिया या स्पेस भी दे दिया तो भी वो आपको सिंटैक्स एरर देना स्टार्ट करने देगा. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक object name is look like this. Now the slash oblique 365.2.5. So now I'm just using this format and check again is it right or wrong. Now it's active and now click on next and next and save it. Now guys, validation error that we are custom validation error. Okay, no problem. I'm just click on here, check the age option. Now guys, now I'm just back to the my app. If I'm just click on my app and I'm refresh, now start for entries. So if I'm just click on like these like employee IDs available student, if you move it, so I'm already give you okay, this is a drag and drop features. Either a employee, student, and account information come on third option, so you can move easily here to here.
Got it? Adjustment. So आप adjustment कर सकते हो if you click on this pencil sign. Okay. So कौन सा टैब पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, so वो आप adjustment कर सकते हो. Now I'm just click on a employee. If I'm just click on an employee and now I'm just click on a new employee and I'm just give the employee name, you can see the date of birth option is come, but there is a no any star option is available. Got my point? Right. There is a no any star option is available. I'm just give the employee name is like AU. Yeah, give me a minute, please. Now you can see there's a no mandatory option is available. Now I'm just click on a name of Asutosh. ASHUTOSH. Asutosh. Now the date of birth of Asutosh. Now I'm select a date of birth like I'm just select in like 2002. So Asutosh क्या एज है यार? बता दो, बर्थडे पार्टी नहीं लेंगे हम आपसे. 14th August 1996. चलिए तो 14th अगस्त 1996. तो 1996 तो ये आ गया और ये यहाँ पे चल रहा है मई. अभी हम इसको अगस्त पे लेके जाते हैं. नाउ अरे भाई जून जुलाई सितंबर आ गया, अगस्त पे क्लिक करना है. अरे भाई क्लिक सिंगल अगस्त एंड 1996 एंड 14. ये है. नाउ देखिए गाइस यहाँ पे ये दो फील्ड आ रही है. आई एम जस्ट क्लिक सेव. तो देखिए ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी इज कमिंग एंड एज इज कमिंग. Yeah. If I'm just create a new account, new contact, or either I'm just go to the I'm adding an employee. So this is the employee name is Asutosh. This is the employee ID. Got it? Now if I'm add a new, no, I'm not adding a contact. I'm just again click on employee or add a new employee. Again, the one employee is added Asutosh. Now I'm just adding a one more employee like a new. I'm just adding a name is like Gotham and I'm searching date of birth it look like in. So it's not my real date of birth, guys. So and click on save. So now you can see that again this option is available, but if you can see the two employees entry is available and both employees you can see the automatically the another employee ID is generated 002 and it's calculate the age. Got it the point? But there's a no mandatory field is available. But if you can go the student and now you can add a student, you can see the star option is available. Because I'm just click on a required field option. Student name is look like a student look like a Raj and date of birth of Raj is so I'm just select the date of birth. Is it like our date of birth is like a 2003. We क्या बोला date of birth, review the following three. What happened? So now I'm just select so now you can see the Raj, the automatically student ID is generated, is calculate the age. Clear the concept? Right, sir.
Anyone, any question related to this? But now No, sir. the some another part is also available. So I'm also cover the mandatory field, auto generate, formula field. But now guys, if you can see the layout, like this is our layout. So ये layout की बात नहीं कर रहा, I'm just talking about the layout form. This layout. And like if you can add something specification or other things, so now you can create a layout. If you can create a layout, it's simply you can just create a field layout. You can just click on a page layout option inside the object, and now the employee layout. If you can click on employee layout, this is a default layout. Now if you can add a layout like this is a these are the two parameters is available. Now if you can see like a date of birth is showing this parameter, and now the age is showing this location. Now you can click on save it. If you can see, where is it? And now if I'm just click on new items, so employee, I'm just, I think so I did an employee, and now new. So, wait, I'm just click on a layout, and I'm just select the layout and just click. Okay, wait, I'm not changing the page layout, and I'm at the layout, student layout. Available in which object? I'm just object student layout. Now I'm just select other like student IDs and date of birth, and this field is available. I'm come to the, here it's not show. Okay, save नहीं हुआ था. Now I'm just again it look like a student ID or either a age or date of birth. बट गए एक और चीज आप यहाँ पे देखना कि अगर आप इनमें से किसी और चीज को भी मैंडेटरी फील्ड बनाना चाहते हो, गॉट इन माय पॉइंट. तो अभी मैंने मैंडेटरी फील्ड से आप यहाँ पे क्लिक करके या अपनी फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं या जो की आइटम है, तो अगर आपने क्लिक कर दिया रिक्वायर्ड पे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मैंडेटरी फील्ड यहाँ पर बन जाएगी. गॉट इन माय पॉइंट. और इधर आई एम यूजिंग नो आई एम नॉट कम टू हियर student ID and date of birth. तो मैंने यहाँ पे सेक्शन दे दिए. I'm just give the two sections कि like age and student name is come to this section and student ID and date of birth come for this section, and now click on a save. And I think so मैंने refresh भी नहीं करा था, तो इसलिए वो अपडेट भी नहीं हुआ. I'm just click on refresh. तो refresh करना भी ज़्यादा जरूरी है guys. Okay. So now you can see. पहले एक रो में आ रहा था, अब अलग हो गया. बट गाइस इफ यू कैन सी कि मैंने जो यहाँ पे लेआउट बताया था, दिस इज अ कस्टमाइजेशन नहीं है, दिस इज अ डिफॉल्ट लेआउट. अगर आप अपना लेआउट भी क्रिएट करना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट अ न्यू एंड सिलेक्ट द लेआउट, एम्प्लॉय लेआउट. अगर हम एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम जिस क्लिक मैं एम्प्लॉय में हूं, तो नाउ द एम्प्लॉय, गिव द नेम ऑफ in layout, so I'm just give the ICCP EMP LAY layout page. Now click on save. अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी मैनेज करना चाहते हो, कस्टमाइजेशन अगर आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो. आप पर्टिकुलर फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट, ऑनर, क्रिएटेड बाय, तो ये आपका सेक्शंस है, ठीक है ना. तो ये आपके यहाँ पर इतने सारे, अगर आप इसमें से कोई भी और चीजें यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना ये सारी चीजें हैं. और इधर मैं यहाँ पर आता हूँ
और ये मेरी कस्टमाइज फील्ड है और मैं चाहता हूं कि इस कस्टमाइज फील्ड के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ और एज इज कम टू दिस ऑप्शन and now click on a save. So you can see guys, this is my customized field. If you can see the page layout, if you can click on a page layout, now the edit, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे अगर एंड में, you can select a field. So यहाँ पर मैंने जो अपनी फील्ड बनाई है like a employee layout और like a ICCP EMP page layout. तो आप मल्टीपल यहाँ पर फील्ड बना सकते हैं कि आप किस टाइप की फील्ड शो करना चाहते हो. हम just click on a employee system administrator and then click on save. And if I'm just click on employee options, now refresh it. Wait, where is field? This is my field. I'm just refresh. So I'm just click on a new. Sorry. So why it's not updated? तो सेम ही फील्ड यहाँ पे अपडेट हो रही है गाइस. अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है. इज इट कॉन्सेप्ट? द लेआउट कॉन्सेप्ट इज गॉट इट कि लेआउट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes. सर मैं ये पूछ रहा था कि जो लेआउट हेडिंग्स हैं उनको भी एडिट कर सकते हैं क्या? लेआउट हेडिंग्स तो आपकी ऑब्जेक्ट नेम है ना, हम अपने अकॉर्डिंग्स में डाल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में आप एडिट करेंगे तो वो एडिट हो जाएंगे ना. क्योंकि देखिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसी के अंदर सारी चीजें, लाइक आपका सरनेम, तो सरनेम अगर हम चेंज करेंगे तो सारी जगह ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा ना हमें. क्योंकि देखो हम हर बार वही कॉमन ऑब्जेक्ट है. अब फील्ड मैंने बनाई है उसके अंदर कर रहा हूं तो वहां पे क्या है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है. वहां पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है. अजूदर गॉट माय पॉइंट? देखिए अगर मैं लेआउट के अंदर भी जाता हूं, if I'm just going on layout, inside the layout I'm just click on like employee layout. So यहाँ पे देखिए क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है. I'm just click on a save it and I'm just click on a page layout. For example, I'm just click on page if you can create a custom field. तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका है फील्ड सिलेक्ट करने का कि आप किस चीज के लिए बना रहे हो. तो मैं एम्प्लॉय के अंदर हूं तो मैं एम्प्लॉय के पेज लेआउट पर ही तो हूं. गॉट इट? अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट पे जाऊंगा तो वो स्टूडेंट पेज लेआउट आपको बताएगा. इज इट क्लियर गाइस? तो होप सो कि नेक्स्ट टाइम भी हमें क्या है, एक्चुअली क्या है, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, क्योंकि देखिए ये चीजें तभी आपकी क्लियर होंगी जब मैं आपको बार बार बताऊंगा. तो ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें हैं. तो ना हो कि मैंने कुछ और फील्ड्स आपको एडिट करी हैं, कुछ और चीजें भी एड ऑन करी हैं. सो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड. और नाउ कि अगर आप अपनी ऐप देखना चाहते हैं, सो अगेन यू कैन जस्ट क्लोज इट each and every tab, and now you can just click on app launcher and view all, and now you can search ICCP Institute. Now you can see your app is ready to use. And now if you can see the employee details, if you can see the student details, and either you can see the account, so you can add account. So you know very well कि आपके अकाउंट के नंबर क्या है, क्या क्या चीजें हैं. So you can add a details. These all are the field. So number generate, auto number generate, date related, dependencies, master child, ये सारी fields मैं आप लोगों को बता चुका. Yes, sir. Got it everyone? अब आपके ऊपर है Yes, कि आप इन सारी को मर्ज करके किस स्टेप्स का अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. नाउ वी हैव मूव फॉर द नेक्स्ट. आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर कुछ नई चीजें लेके आएंगे हम आपके साथ. थैंक यू गाइस. आई थिंक सो या सर बताइए. ये एम्प्लॉय